नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है गाइज़ आपका अपने चैनल के एफसीएस पर। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच देखने को मिला और ऑफ़ कोर्स शुभमन गिल जिन्होंने आज एक बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस किया और बिल्कुल जस्टिफ़ाई किया कि क्यों इन्हें जो ग्राउंड है बहुत ज़्यादा पसंद है और क्या ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी की आज शुभमन गिल ने। और फाइनली आज हमें आईपीएल का पहला क्वालीफायर टीम मिल चुका है, वो है गुजरात टाइटंस। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब गुजरात टाइटंस जो है अब इस आईपीएल की पहली टीम बन चुकी है जो क्वालीफाई करेगी। और ये जो टीम है अपने ट्रॉफी को बचाने के लिए, अपनी ट्रॉफी को दोबारा से जीवित रखने के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, क्या ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है इस टीम का और मुझे लगता है कि ये टीम ट्रॉफी भी जीत सकती है क्योंकि अपने घर में इनको फाइनल भी खेलना है। तो इस कंडीशन का जो इनको भली-भाँति पता है कि इस कंडीशन पे आप किस तरह से बॉलर्स का यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बॉलर है इनके पास जिन्होंने विकेट्स नहीं चटकाई हो इस मैदान में। इस मैदान में सबने विकेट्स चटकाई है और राशिद खान हो या मोहम्मद शमी की बात करें तो यहाँ पे विकेट्स चटकाई गई है। और गुजरात की टीम जो है इस बार बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही है और मुझे लगता है कि शायद इस बार दोबारा से ट्रॉफी जो है इनके नाम आने वाली है। तो चलिए बात करते हैं और स्पोर्ट्स ब्रेकडाउन और केएफसीएस दोनों ऑडियंस का बहुत-बहुत स्वागत है। आइए और मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए एंड आई होप आप लोगों ने भी मैच को बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया होगा, स्पेशली अगर आपने मैच को जियो सिनेमा ऐप से देखा होगा, डिफरेंट कैमरा एंगल से हर तरह से शॉट्स को एन्जॉय किया होगा तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आया होगा आई होप। तो अब थोड़ा-सा डिटेल में बात करते हैं कि जो मैच हुआ, कितना ज़बरदस्त मैच था ये और किस तरह से ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल जहाँ बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, वहीं दूसरे बल्लेबाज़ कितना स्ट्रगल कर रहे थे। शुभमन गिल की सेंचुरी होने के बावजूद टीम का जो स्कोर है सिर्फ़ 188 बनता है। तो अब इनिंग्स के बारे में बात करना तो ज़रूर बनता है क्योंकि शुभमन गिल एक ऐसे प्लेयर बन के उभरे हैं इस साल, इन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है। तो अब तीनों फॉर्मेट में शतक लगाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि शुभमन गिल एक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी और टीम इंडिया के लिए एक उभरता सितारा है जो बहुत आने वाले समय में बहुत जल्द जो है आपको राज करता हुआ नज़र आएगा और ये खिलाड़ी कुछ ख़ास करके जाएगा। वर्ल्ड कप भी आने वाला है और बहुत ज़बरदस्त खेल खेलेंगे और अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी होगा। तो बिल्कुल इस खिलाड़ी पे नज़र रहेगी, क्या ज़बरदस्त पारी शुभमन गिल ने खेली है। गुजरात के फैन्स आ सकते हैं, मेरे साथ जुड़े और बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल की भी अब बात की गई क्योंकि आज जो टीम क्वालीफाई की है इसके साथ के साथ एक और टीम जो है एलिमिनेट भी हो गई है। दोनों प्रॉमिसिंग टीम दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। देखिए दिल्ली कैपिटल्स का तो खैर सीज़न ही स्टार्टिंग से अच्छा नहीं था बट सनराइजर्स हैदराबाद ये टीम प्रॉमिसिंग नज़र आ रही थी। ये टीम के प्लेयर्स अच्छे थे बट स्टिल ये टीम क्वालीफाई नहीं कर पाई है। तो सबसे बड़े दुःख की बात है कि आपके पास इतने अच्छे-अच्छे खिलाड़ी एडन मार्करम जिन्होंने इस साल अफ्रीका में ट्रॉफ़ी जीत के आ रहे हैं, जो ऐसे 20 का ट्रॉफ़ी उन्होंने जिताया सनराइज़र्स हैदराबाद को पूरी उम्मीदें थी। तो यहाँ पे जो है सेम कर नहीं पाए हैं बट रियलिटी तो ये है कि शायद आईपीएल का जो टूर्नामेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरे लीग से। इस चीज़ का जो है जस्टिफिकेशन मिल गया है कि इस साउथ अफ्रीका में खेलना और भारत में खेलने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये देखा हमने कैप्टेंसी किस तरह की कप्तानी की है। आई होप आने वाले टाइम में मुझे लगता है शायद कप्तान भी बदलते हुए नज़र आ जाए सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए। तो गाइस ये है पॉइंट्स टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से गुजरात टाइटंस जो है क्वालीफाई कर चुकी है। पहली टीम बन चुकी है क्वालीफाई करने वाली और मैं समझता हूँ ये टॉप पे रहेंगे और मुझे लगता नहीं कि कोई अब इनको नीचे कर सकता है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग भी अगर इस मैच जीत जाते हैं बचे हुए मैच को तो वो भी नंबर 2 पे फिनिश कर जाएँगे। मुंबई इंडियंस का मैच भी देखना होगा किस तरीके का होगा। पर बातचीत करनी पड़ेगी आज के मैच की।
कि गुजरात के जो बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल अलग खेल रहे थे, बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो कैसे ये स्पेशल इनिंग्स, मैं कहूँगा कि सबसे स्पेशल इनिंग्स आई है शुभमन गिल की तरफ से। और ये ऐसा बल्लेबाज जो हर तरीके के शॉट्स खेले, डोमिनेशन इनका कितना बढ़िया है, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है और इसी मैदान पे इंटरनेशनल टी20 शतक भी आया था उनका अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी भारत को मिल चुका है, एक ऐसा ओपनर मिल चुका है जो तीनों फॉर्मेट में राज करेगा और बहुत सारे रन्स बनाने वाला है, बहुत सारे रन्स हम देखने वाले हैं शुभमन गिल के बल्ले से। एक और मैच था जिसमें वो शतक नहीं मार पाए थे, अनफॉर्चुनेटली नॉट आउट गए थे, पर इस बार उन्होंने शतक लगाया है और बहुत ही ज़बरदस्त। और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन भारतीय टीम के लिए कि खिलाड़ी अपने जो है फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो एक एक करके बात करते हैं कि कीजिएगा, तो हम बात करते हैं कि जो टीम कॉम्बिनेशन थी, किस तरह का टीम कॉम्बिनेशन के साथ सनराइज़र्स हैदराबाद उतरी। तो अगर मैं बात करूँ तो टॉस की, तो सनराइज़र्स हैदराबाद टॉस जीतते हैं, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करते हैं। मैं समझता हूँ बॉलिंग का जो फैसला था सही भी था, इतना भी गलत डिसीजन मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। रिद्धिमान साहा आते हैं, रिद्धिमान साहा डक पे आउट हो जाते हैं। तीसरी गेंद पर ही आते हैं भुवनेश्वर कुमार, विकेट चटका के चले जाते हैं। उसके बाद शुभमन गिल, साई सुदर्शन ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो लंबे टाइम तक गुजरात टाइटंस को सर्विसेज देने वाले हैं। तो मुझे लगता है साई सुदर्शन ने आज फिर से जस्टिफाई किया अपनी इनिंग्स खेल के। 36 गेंद में 47 रन बनाए। हालांकि देखिए स्ट्राइक रेट के लिहाज से इतना कोई इम्पोर्टेंट इनिंग्स नहीं थी, बट जैसी भी इनिंग्स थी अच्छी थी। तो अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली आज। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या स्ट्रगल करते हुए नजर आए, फिर आपके मिलर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, आपके तेवतिया भी आउट हो जाते हैं। बट एट द एंड शुभमन गिल एक होता है, एक लोन वॉरियर। अगर शुभमन गिल नहीं होते तो मैं समझता हूँ यहाँ पे कम से कम 30 से 25 रन शॉर्ट रह जाते और शायद सनराइजर्स हैदराबाद ये मैच जीत भी सकती थी, क्योंकि जो प्रेशर क्रिएट किया बॉलर्स ने लास्ट में विकेट चटका के स्टार्टिंग में हैदराबाद हार गई। तो मैं समझता हूँ सैल्यूट है इस प्लेयर को, इसकी शानदार इनिंग्स को। क्या ज़बरदस्त पारी खेली शुभमन गिल ने। और और 58 बॉल्स में 101 रन बनाए, 174 का स्ट्राइक रेट। तो मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया इनिंग्स। और एट द एंड जो है उन्होंने एक बढ़िया पारी खेली जो कि भारतीय टीम को भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस देने वाली है कि क्या पॉजिटिव इनिंग्स खेली। बहुत सारे आउटकम्स निकले टीम इंडिया के लिए इस मैच में। मैं कहूँगा सबसे पहले शुभमन गिल और भुवनेश्वर कुमार जिस तरह से बॉलिंग की उन्होंने आज, पावर प्ले में आए, डेथ में आए, दोनों बार आए और विकेट सटका के गए। पहला ओवर डाला और 20वां ओवर भी डाला है। तो कहीं ना कहीं जब ड्रॉप हुए थे भुवनेश्वर कुमार तो इस पे भरोसा नहीं था किसी को भी, क्योंकि 19वें ओवर में जो है काफ़ी रन्स दे देते थे। हमें याद है कि पहले बुमराह और भुवनेश्वर की जोड़ी चलती थी। अब भुवनेश्वर कुमार थोड़ा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि बुरी तरह फॉर्म में आ गए, बट थोड़ा सा मुझे झलकियाँ दिखी है भुवनेश्वर कुमार में। कभी पुराना भुवनेश्वर कुमार मिल चुका है। पहले ओवर में आते हैं, रिद्धिमान साहा को आउट कर देते हैं और आखिरी ओवर में 2-3 विकेट सटका देते हैं। अपने आप में बहुत बढ़िया। और मैं समझता चौथा विकेट भी भुवनेश्वर कुमार का रन आउट जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त रन आउट था। तो कुछ आउटकम्स मिले भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के लिए। क्या भुवनेश्वर कुमार को भी कंसिडर किया जा सकता है सिलेक्शन कमेटी में? मुझे लगता है शायद इस बात की चर्चा ज़रूर होगी इस मैच के बाद, क्योंकि जो शानदार गेंदबाजी की है मोहम्मद शमी ने, तो अच्छी गेंदबाजी की है, साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार ने भी एक प्रॉमिस दिखाया है कि उनमें अभी भी वो टैलेंट है। जिस विकेट टेकर को हम जानते हैं, जिस भुवनेश्वर कुमार को हम जानते हैं, उन्होंने वही इनिंग्स खेली है। और मैं समझता हूँ ऐसे ही इनिंग्स अगर खेलते हैं, आगे आने वाले ओडीआई मैचेस जहाँ भी होते हैं वहाँ पे अगर आप मौका देंगे तो ज़रूर पता चलेगा कि ये खिलाड़ी आगे कितना खेल सकता है, टीम इंडिया के लिए कितनी सर्विसेज दे सकता है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव भारतीय टीम के लिए इस मैचेस में निकल के आया है।
और भी 2-4 चीज़ें हैं जो भारतीय टीम के लिए अच्छी रही है। मोहम्मद शमी की बॉलिंग, मोहम्मद शमी आ रहे हैं, पावर प्ले में विकेट चटका रहे हैं, साथ के साथ डेथ ओवर्स में भी विकेट चटका रहे हैं, इकोनॉमिकल रह रहे हैं। तो भारतीय टीम के लिए देखिए शुभमन गिल, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार, तो यहाँ पे विकेट्स जो ले भी रहे हैं, रन्स भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है भारतीय टीम के लिए। चलिए अब थोड़ा-सा बात करते हैं सनराइज़र्स हैदराबाद की। अगर मैं सनराइज़र्स हैदराबाद की बात करूँ तो उन्होंने क्या किया है, मार्को येंसन को बुलाते हैं और ग्लेन फिलिप्स को बिठा देते हैं। मैं समझ में ये नहीं आया कि मेरे को थोड़ा अटपटा-सा लगा कि मतलब आप क्यों ग्लेन फिलिप्स को आपने बिठा दिया? क्योंकि देखिए ग्लेन फिलिप्स जो थे आपके पिछले मैच में, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले मैच में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिए थे अगेंस्ट राजस्थान। उस मैच में वापस कोई लेके आया था वो ग्लेन फिलिप्स ही थे। उनके 3-4 छक्के जो उन्होंने लगातार लगाए थे गेंदों में, तो ग्लेन फिलिप्स को ज़रूर इस टीम में होना चाहिए था। बाकी हम बात करें तो मोहम्मद शमी इसमें आते हैं, अनमोलप्रीत सिंह को फर्स्ट ओवर में आउट कर देते हैं। तो हमने दोनों तरफ से देखा कि भुवनेश्वर कुमार आते हैं, पहले ओवर में आउट कर देते हैं, मोहम्मद शमी आते हैं, वो पहले ओवर में आउट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप देखी हमें कि हमें एक फास्ट बॉलिंग यूनिट हमारे पास है जो विकेट्स चटका सकती है। और ये पॉजिटिव साइन है वर्ल्ड कप के लिए। भारतीय टीम के जब चयन होगा वर्ल्ड कप के लिए, मुझे लगता है एक बार ज़रूर भुवनेश्वर कुमार के नाम पे विचार किया जाएगा शायद में भी। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट में ये मैच हुआ है। भारतीय टीम के कुछ पॉजिटिव्स आए। इसके बाद फिर आपके आप मार्करम आते हैं, फिर त्रिपाठी, ये भी फ्लॉप रहते हैं। मार्करम भी 10 रन बना के आउट हो जाते हैं। हेनरिक क्लासन, हेनरिक क्लासन के लिए मैं यही कहूँगा, देखिए जो हमेशा हम कहते आए हैं कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और कंडीशन के हिसाब से बल्लेबाजी अच्छी करते हैं। तो हेनरिक क्लासन आज कोशिश तो पूरी कर रहे थे, 44 गेंदों में 64 रन बनाए थे, तो एक अच्छी पारी देखने को मिली। 145 का स्ट्राइक रेट था, उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खेल नहीं पाया। समद भी आउट हो गए, संवीर सिंह भी आउट हो गए, और समद के आउट होने के बाद ये चीज़ें पता लगी कि अब जो है जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने 26 गेंदों में 27 रन भी बनाए, 5 विकेट भी लिया, 27 रन भी बनाए, तो अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त थी वो इनिंग्स। और मैं समझता हूँ कि आज भुवनेश्वर कुमार जस्टिफाई किया अपने आप को कि बिल्कुल भुवनेश्वर कुमार में भी वो टैलेंट है। और आप ये नहीं कह सकते कि भुवनेश्वर कुमार में वो बात नहीं है, क्या भुवनेश्वर कुमार परफॉर्मेंस नहीं दे सकते? परफॉर्मेंस बिल्कुल दे सकते हैं, और ये एक उभरता हुआ खिलाड़ी है। आई होप इन्हें वर्ल्ड कप में शायद से मौका मिलेगा, क्योंकि जब आप एक तीसरा फास्ट बॉलर ढूंढते हैं तो मुझे लगता है कि शमी सिराज के साथ भुवनेश्वर कुमार भी आ सकते हैं। इस पे चर्चा ज़रूर होगी। मुझे ऐसा लगता है सेलेक्टर एक बार ज़रूर सोच विचार करेंगे इनके नामों पे, और बुमराह की फिटनेस भी देखी जाएगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है एक बिल्कुल सिरदर्दी है सिलेक्शन कमेटी के लिए। एक बार ज़रूर देखेंगे भुवनेश्वर कुमार के लिए। अब थोड़ा बात करते हैं कि गुजरात टाइटंस क्या खास बनाती है इस टीम को। गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे होल्स भी नज़र आते हैं कि आपके बल्लेबाज जो है यूनिटी के साथ बल्लेबाजी नहीं करते हैं, कई बार कोलैप्स भी होता है, बट स्टिल ये टीम जीत जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न आपने देखा कि उनके बॉलर्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। जब जब उनको बॉलर्स को विकेट की ज़रूरत होती है, गुजरात टाइटंस को उनके बॉलर्स जो है विकेट्स ला कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब आप विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स में लेते रहते हैं तो आपके लिए टारगेट जो है, आप कोई भी टारगेट डिफेंड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बॉलिंग यूनिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। राशिद खान और मोहम्मद शमी दोनों ने मिल के ओवरऑल 46 विकेट्स चटकाए हैं, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है कि ये टीम सबसे पहले क्वालिफाई की है और सबसे बेस्ट टीम नज़र आ रही है इस आईपीएल में। सो मैं समझता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस और वन ऑफ द बेस्ट। तो हमारे पास आ गए स्पोर्ट्स ब्रेकडाउन जिनके, सो ऑनर ऑफ स्पोर्ट्स ब्रेकडाउन मिस्टर पवन। सो पवन, first of all, congratulations for Shanaka. Finally, Shanaka get a debut in IPL. Yes,
Yeah, I think they're just trying out players for the last two games. I think the GT knew that they're going to qualify anyways for playoffs, so I think they started, I mean, giving the substitutes also a chance. I think. So yeah, I think good performance from GT overall. I think Shubman Gill scored a very good 100 today, and yeah, I think it was a convincing performance. I knew Gujarat will win at Ahmedabad today. I was 100% sure. And I knew Shubman Gill will perform today. And he delivered, which added my points of fantasy. So I knew Shubman Gill will perform today, and he did. So, yeah, I think overall, I think GT deserve to be in the playoffs. I think they have a team unit. I mean, everyone is performing for GT. It's good to see Yash Dyer coming back after getting hit for five sixes. I think I heard a story that he was depressed and then he lost weight after that. Rinku Singh five sixes and he was not in a good state. So I think need to give credit for GT management for giving back Yash Dyer back. I think yes. I think overall, I think this management is very good compared to how Delhi Capitals or even SRH are running. I think GT is the management, all the players consistently, they are giving them runs, they are giving everyone in that team got a chance, and their main players are performing, so they deserve it. Overall, I think Gujarat is a very good team. I hope that things continue for this team. They can go and win a second IPL title. I feel right now they can. I don't think even CSK and MI can stop this GT team. I know GT team lost a few matches, but still I think when it comes to their core and when it comes to important matches, I think Rashid Khan, Hardik Pandya, David Miller, Shubman Gill, now Mohammad Shami is performing, Mohit Sharma. I think you cannot stop GT at the moment. Yeah, Pavan, when we compare to the first two season of IPL, we see the Chennai Super King, bulk of all-rounder, bulk of good batsmen, good bowlers also. Do you see such a thing in GT also? That GT is also flowing in that way, back to back, good performance, back to back qualification, top of the table, good bowlers as well as spinners. I don't think all rounders wise you can specify like that, because you see Lucknow Super Giants, then they have 8 or 9 all rounders, and you see how KL Rahul mismanages all the all rounders and all. I think mainly it's captaincy wise. I think Hardik Pandya has led the team well. I think especially in the field, the bowling rotations wise, I've always admired Hardik Pandya as a captain. I hope he doesn't go back to Mumbai Indians. There are rumors that Mumbai Indians are trying to get Hardik Pandya back next season. I hope he doesn't leave the GT franchise, because it's no point going to another franchise when this franchise is doing very well. It's pointless. Whatever claims that MI gives money or whatever, I don't think Hardik Pandya should listen to these offers, because you have a team right here, GT. You have some good players over there with Shubman Gill, Rashid Khan, David Miller, himself, Hardik Pandya, Saha is performing, Shami. Everyone is performing this team, so I don't think. I mean, as I said, I think captaincy is a key factor why this team is performing well, and then I think team members are doing well. I think all 11 are stepping up when needed, and yeah, I think senior players are performing well also. So I think that's what has helped this GT team to go very far. Yeah. Okay, so Pavan, let's talk about Sunrisers Hyderabad. If we compare both the teams, Delhi, if I talk about Delhi, Delhi was already down to What's the earth. point of talk about SRH? They are already below last. Is just net Yeah, run rate that differs between both these teams. Anyways, both the teams have not had a good season. It's due to their management. That's the only thing I can say. Because of the management, the team selection is why both these teams are 9th and 10th respectively. There is nothing much to talk about both these teams. It's been a failure of a season for both the teams. Just net run rate differs both these teams, and yeah, I think if SRH wants to deny MI to go to the playoffs, yeah, maybe they can help other teams by beating Mumbai Indians. But otherwise, talking about SRH, I mean, there's not much of the compare. That's what I'm saying. It's better rather than giving Indian captain. I said this always for SRH. Should have given Mayank Agrawal captain. I told this. I mean, before season started, also I told. But SRH always has this policy of going for overseas. Not everyone is like David Warner. David Warner was also in form when he led SRH to glory in 2016. He was performing. Rest of the team were performing. There were youngsters.
You cannot expect that every season from a overseas captain to obviously lead a IPL franchise to victory. When you had a player like Mayank Agrawal and you don't even back Mayank Agrawal when he's not, um, he was playing as a player, as a player, and they're not backing him also. They're dropping him. They're making Tripathi open. I don't know what is wrong with SRH also with the batting order. Henry Class, Glenn Phillips dropped for this match. Why would you drop Glenn Phillips in this match when he Yes. performed well in the last two matches? You had a Umran Malik, okay? Umran Malik was performing well last season, okay, picking up 20 plus wickets. Just because of one or two matches he doesn't perform doesn't mean you drop a player like Umran Malik. See GT, how they back players. I mean, if Shami doesn't perform one or two games, still they'll give a chance for Mohammad Shami. Same with Rashid Khan. What is this franchise, SRH? They always drop players after one or two matches. We are seeing Mayank dropped after one or two if he doesn't perform. Glenn Phillips is dropped all of a sudden. So I don't know what to say for SRH. Same case with Delhi also. Delhi is also last because of that scenario only. The changing players, chopping, changing. We lost 5 games in a row because we were changing players, not finding the batting order. So that those are the similarities why these two teams are in the bottom right now. Yeah, Pavan, if we see the on paper Sunrise Hyderabad team, Sunrise Hyderabad is looking so strong in paper. Do you think so many players will be released now from Sunrises Hyderabad, including Harry Brook? I mean, Harry Brook should be released because 13 crores. It's not worth 13 crores just scoring 100 in one match and then other matches you're not performing. But they should change the squad now. They got the budget. Okay, they got the highest budget and they bought these players. Only problem with this SRH management is they're not backing the players. That's the problem. If you fail one or two matches, doesn't matter. Give them another chance. Doesn't matter if you're losing. Who knows? At the end of the IPL tournament that you get the wins. Who knows? You can make a comeback like that. But SRH, they are not like that. They always want to change players. They want to experiment. They're bringing Henrik Klassen way back in the order. Umran Malik is completely dropped, not to be seen. Mayank Markande is brought after the mid-season of the table, not in the first match itself. So I don't know what SRH are thinking. They are not. They haven't found the correct playing 11 even now. I would say that's why I'm saying they're the most disappointing team because they're the highest budget. And with the highest budget also, if they're performing like this, well, I don't know. What's the point of releasing players? The thing is for me, release the players that haven't performed this season. I think Harry Brook is one. There could be a few other players also. Don't release everyone from that squad. Back them. That's why I'm saying back the players that are there. There are very good, talented players over there. Mayank Agrawal. Tripathi had an off season, but still I don't think he should be dropped. See how he can perform at number 3. Abhishek Sharma, why in the beginning of the season you make him bat at number 5, now you're making him to open? This is the certain issues that SRH are having. They should fix the batting order. If they fix the batting order, round to 6, stick to that batting order until the end of the season. Same problem happened with Delhi Capitals. They never stick with the batting order 1 to 6. That's why they brought Priyam Garg in one match, they dropped him. Then they brought someone else, Yash Tool dropped him. But problem of changing the batting order is why these two teams are at the bottom right now. Okay. And they should back players like Umran Malik. I'm not happy with what SRH are doing with Umran Malik at the moment. That guy has potential. And just because of 1-2 matches he didn't perform doesn't mean you drop a player like him. Maybe let him concede 40 runs. You saw now Yash Dayal. See how he came back after those 5 6s of you. Rinku Singh today against SRH. Yeah, maybe he's not bowling the last over yet. But at least they're giving him a chance after that. That's what SRH should do. Why you're dropping a bowler like Umran Malik who has potential? Any other team would have taken Umran Malik. Even Mumbai Indians would have taken a bowler like Umran Malik. I don't know what is he doing in the bench right now. Umran Malik, he should be in the playing 11. Just because as if Natarajan has done much better than Umran Malik for SRH, for Umran Malik to be bench right now. I don't know what reasons the SRH are doing right now. And Wu in the death is a complete disaster. He goes for runs. That's why I'm saying a bowler like Umran Malik, don't waste him in the bench. Play him the playing 11. Doesn't matter 1 or 2 matches, you concede 40 or 50 runs. That bowler can do at least pick up wickets in the death. That is the reason why SRH right now are in that position because they're not backing players. Yeah. Okay, so Pawan, now it's prediction time for us because now in each and every match, points table will be changed. You can see points table in the screen also. So now, Pawan, two teams are disqualified: Delhi and Sunrise Hyderabad. One team qualified. Three places need to be filled.
So what I do you still think? stick with my same prediction. Yeah, do you think I CSK or CSK will C? be second. CSK will be second. There's no doubt. I'm not sure whether they'll lose to Delhi. That I don't know. I think they have one match left, right? I think Yeah, 15, 15 will be enough for them to qualify. I don't know top two wise what will happen for CSK. That I'm not sure. But I think they'll definitely go to the playoffs. I think 15 will be enough, in my opinion. So CSK through for sure. I don't know whether it's second, third, or fourth, but CSK are going to go to the playoffs, in my opinion, no matter what happens to them in the next match. I see Lucknow beating him. I think tomorrow it's in Lucknow. I'm backing Lucknow Super Giants. The reason why is that they've found the combination at last. I know KL Rahul is not playing, but Quinton de Kock is stepping up right now. If Mayers and Quinton de Kock can put up a good score, put up a good opening partnership, then Puran and Stoiner step up. I know they lost in the last match, but if they can step up tomorrow, and then I think the middle order, I think if this Prayak Mankad finds his form like the last match, he scored that 60 odd or what. If he can perform like that tomorrow and in Lucknow also, and the bowlers, I think they can do a job. That's what I'm thinking. Maybe they can go for overseas bowler and perhaps risk player like Kyle Mayers for me, because right now Quinton de Kock is performing right now. I would like to see a Navinal Haq back in the playing 11 and maybe drop Kyle Mayers. I don't know whether LSG will do that, but it's just a suggestion that I'm saying, because they have batters like Manan Bora, and Karun Nair in the bench, and perhaps they can even open Prayak Mankad, in my opinion. So if they can do something like that and bring in a Karun Nair or Manan Bora and bring in a Naminal Haq, I think that will boost the bowling of LSG, because they're conceding 170, 180 right now. I think Naminal Haq is a bowler who can pick up wickets in the power play and pick up wickets in the death. So I think if they can bring him Naminal Haq, I think LSG have a high chance of winning tomorrow. okay. Pawan, main thing is now for qualification scenario there is Punjab, there is Rajasthan, there is RCB also. So which team probability is high? RCB, Punjab, Rajasthan, Mumbai, I think Lucknow. RCB. I think RCB, because last match for them is at home. I think against GT. I think GT now already qualified. I don't think. I think they will rest certain players, and I think RCB will be at advantage being at home. And then they have another match also. I think against SRH, which is going to be easy for them. I think the way that SRH are playing, I don't think they can win the remaining matches remaining. So for me, I think likely, I think RCB can perhaps win tomorrow. Yeah, I agree. I agree with that. MI won't lose against SRH, but even if that happens, the net run rate will be affection. That's my worry. Mumbai will reach 16. I know that. Mumbai will reach 16, but I'm backing RCB to win their next two, because SRH and GT have qualified already, and they will definitely rest players. They won't go with the same combination. They will take things lightly, and RCB will be full focus this time. And especially at Bengaluru, I expect a big crowd after 5 matches now. They haven't played at home, they've been playing away. So I expect RCB to turn out in their last two. SRH going to be easy for RCB. I don't think even at Hyderabad, unless they completely choke right now after that 59 all out against RR. If they don't get confidence from that match and perform against SRH, well, I don't know what to say about RCB in the first place, because that's the thing. That SRH match will be important. If they can win that convincingly, then I think they can beat a GT, Gujarat Titans, because Gujarat Titans have already qualified. I think they'll take things slightly this time around, and I think they'll go to the playoffs. In my opinion, I'm backing RCB because of net run rate. If MI had a very good net run rate, then Mumbai Indians are qualifying. If they had a good positive net run rate, but I think it's going to be RCB in my opinion. Top four. Mumbai might finish fifth. Okay, 16 point maximum RCB or PVS coming less chance for both coming up. RCB vs GT game big game also. PVKs facing RR. PBKs, I don't think. Punjab Kings, they always, last match they Still, somehow I am get hoping that Delhi Capitals will definitely beat Punjab. Still, that. Well, forget about that match. Even if we lose that match, Delhi, if Punjab wins that match, Rajasthan, I think they'll come back. I think they'll come back very strong in their last match against PBKs. I don't see.
PBK's Dharmashala, they haven't even played in Dharmashala in Punjab. I don't think PBK's is going to win their two games. I'm 100% sure. I'm telling this right now. It's going to be between RCB and MI. If RCB choke, that's what I'm saying. This is RCB's best opportunity because seeing their net run rate, best opportunity. Them SRH and GT will take things lightly. I'm telling you, GT and it's away. It's in Bangalore. This is best chance for RCB. Last time they depended on others. This time it's themselves only who can get to the playoffs, and especially because it's at home against Gujarat Titans, and with the crowd that turns out, and with the way that Gujarat might not take it seriously this match because they've already qualified. I think, and they have extra game. No, they have only one match. No, anyways, I think they'll be in the top two regardless whether they lose or win. GT are going to be one or two, so it doesn't matter for them. Anyways, if they lose against RCB, RCB need to turn out in their last two. That's why I'm saying SRH match will be very important. If they win that, I think at home they can beat Gujarat Titans. I'm 90% sure. I'm not going to say 100 because RCB, it's a different team. You never know what happens with that team. Suddenly they'll be all out for under 100. Sometimes they'll bowl the opponents under 100. That is what RCB, you cannot predict about RCB. So I'm backing RCB to get to top four again because they have been in the playoffs last 3 seasons. They have kept that consistency. Faf to Pesci can score like yesterday. If Maxwell and Faf can put the correct decent partnership and then bowling, Siraj and the others also step up, I think RCB can go to the playoffs. Yeah. Okay. Okay. So Pawan, suppose you are in a dugout of Mumbai. Okay, and you have to decide for tomorrow match that what will be your playing combination. You know that in Lucknow there are two type of pitch. One is black soil and one is red soil. In both spin is there. So who is your what will be your playing 11 for Mumbai Indians to win match against Lucknow? Mumbai Indians will. Uh, yeah, definitely. I think they won't change the batting order. So I think Rohit Kishan, um, Surya Kumar Do you Yadav. I think think Tilak Green Verma is should there come? tomorrow. Tilak Do you Verma will be back yes. tomorrow. So I think Tilak Verma will play. Cameron Green, Nihal Vadera, and Tim David. That's my top seven. I wouldn't change that at all. So that is my top seven right there. And then the four bowlers. Only I think that's what I think. The impact play. I think they'll play a spinner tomorrow, extra spinner. It depends on the conditions. That's it. I don't know. Lucknow is very unpredictable whether it's a seamers pitch or fast bowling pitch or spin bowling But pitch. in I both don't the know. soil spin is there. Spin will be there. In black soil spin will be maximum, but in red soil also there will be some spin condition. So definitely, I think Piyush Chawla and Kumar Karthikeya will play, and then I think they'll back Shocking, Madhaval. shocking. No Shokin. Madhaval and this guy. Yeah, they have to go with the overseas fast bowler, so they'll go with Chris Jordan will play tomorrow. Yeah. Um, Maybe this is the tough thing is that they'll need two overseas bowlers, no? So I think they'll go with Jordan and Berendorf, and then they'll go with Chawla and Karthike, and then I think this who's that bowler who played against CSK, that Raghav Gopal or someone, that guy will play tomorrow ahead of Shokin. Yeah. There is this spinner, I can't remember his name. Wait, I'll check them my squad. I don't think they'll go with Shokin. I think he's done for the season, in my opinion. They'll go with this uncapped Indian player. Wait, I'll check them my squad. Um, yeah, Raghav Goyal, yes, 21 years. Rahib Goyal. Okay. Yes, him. They'll go with him. Or if they want, they can try a Shams Mulani. It's a good option, but they haven't still opted with him. So I feel he's 25. When they played a 21-year-old like Raghav Goyal, then I think they'll play him tomorrow. Okay, Pavan. What will be the tips for Rohit Sharma? You see, the previously he has tried something, And some if good it's a fast shots. bowling pitch, I would prefer Arjun Tendulkar over Mohammad Arshad Khan because the bounce that he will offer Arjun Tendulkar, and he's all round also. I prefer if Arjun Tendulkar plays tomorrow, actually, in this pitch in Lucknow. If it's a seamers pitch, I actually prefer Arjun Tendulkar over Arshad Khan. Okay, so Pavan, what will you suggest to Rohit Sharma in for so that he will back on form? Listen, You see.
I've said this before also, no, like Rohit Sharma, there's nothing to say about him, no. I mean, it's him only who can improve his form. Others can't tell him what's to be done or whatever. He's just like Virat Kohli. Kohli also took so many years to find his form. Same thing is happening to Rohit. Rohit will get his form eventually. I mean, Mumbai Indians, anyways, in a playoffs position right now. So, I mean, even if Rohit fails, the others are stepping up. We only need Rohit as a captain right now. I mean, my fans also know that they just need Rohit as a captain right now. So even if Rohit fails, others are stepping up. So I don't think Rohit's form is going to affect MI to not go to playoffs, because Surya Kumar Yadav is performing, Tilak Verma, Nehal Vadera, Tim David, Cameron Green, all of them are performing. Ishan Kishan is also performing. So just because one player is not performing doesn't mean that the rest of the players are going to be affected. We've seen that this season. Rohit Sharma continuously failing, only 150 got. Still MI top four position right now. So that's a right. I don't think Rohit's form is going to be a question here. It's how the bowling attack does tomorrow against LST is where MI is going to win or lose tomorrow. Yeah, Yeah. Anyways, Kunal, I can't stay for that long. yeah. I'm not well also, so I'll be Just leaving. one So last question, Pavan. yeah. You see the performance of today, Bhuvneshwar Kumar and Mohammad Shami. Do you think Indian BCCI will think about Bhuvneshwar Kumar in World Cup team with World this ODI World performance? Cup. Yeah, ODI World Cup. Yeah, I think so. I think ODI cricket. I think Bhuvi still has some time. I think he can be considered, but I don't think he'll be in the playing 11. But he can at least be in the squad. I think because of his experience or whatever. I think that will be valuable, and he can play certain matches if he wants, depending on the pitch. But yeah, I think bowler like Bhuvi can play. yeah, Okay, anyways, yeah. see you Okay, guys. Yeah, thank you. and Thank you, Pavan. Lucknow will win tomorrow. That's it. Yeah. Yeah, okay, that's it. ओके तो गाइस हमने देखा आपने देखा स्पोर्ट्स ब्रेकडाउन जिन्होंने पूरा स्पोर्ट्स ब्रेकडाउन चला रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्रिडिक्शन उन्होंने दे दी है लखनऊ के साथ जा रहे हैं बट मैं जा रहा हूँ मुंबई इंडियंस के साथ क्योंकि देखिए मुंबई इंडियंस जो है ऐसे टाइम पे ही वो क्वालिफाई कर जाते हैं उनके पास एक्सपीरियंस है 5 ट्रॉफी यूं ही नहीं आ जाती है और मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस जो है थोड़ा सा फॉर्म में आ चुकी है और कल देखना पड़ेगा कि कैसे पिच होगी पिच के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलेंगी मेरे प्रिडिक्शन में मुंबई इंडियंस आ रही है लखनऊ को भी मैं ज़्यादा पीछे नहीं रखूंगा मुंबई इंडियंस 51 और 49% लखनऊ सुपर जाइंट्स क्योंकि कुछ चीज़ें जो है लखनऊ सुपर जाइंट्स से अगेंस्ट भी जाएगी ऐसा नहीं है कि लखनऊ की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मुंबई इंडियंस जीत सकती है इस मैच को भी तो देखते हैं कैसा रहता है तो वो भी कोई कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकता है मुंबई इंडियंस या लखनऊ सुपर जाइंट्स मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस और अगर मुंबई इंडियंस कल जीतती है तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मैं किसी को देख करते हुए देखना चाहूँगा वो वन एंड ओनली रोहित शर्मा और सबसे ज़्यादा विकेट्स पीयूष चावला ये मेरा प्रिडिक्शन है और मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस कल कुछ करके दिखाएगी कुछ अलग होगा और कल लखनऊ को हार थमाई जाएगी ऐसा मुझे लगता है बाकी देखते हैं कैसा रहता है मैच और गाइस जैसा कि आज का मैच रहा है बहुत ही ज़बरदस्त आपने देखा होगा और आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे आईपीएल को तो ऐसे ही एंजॉय करते रहिए और हमारे शो को भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि हम क्रिकेट फैंस के साथ इंटरेक्शन रखते हैं और इसका जो इंटरेस्ट है मेरे को लग रहा है कि मेरे KFCS फैमिली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है इंटरव्यूज़ को बहुत ज़्यादा आप लोग सीरियसली लेते हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और रिव्यू शो को भी तो जैसे कि मैंने वोटिंग भी कराई थी तो आई होप गाइस ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मिलते हैं गाइस अगले मैच में एक बेहतरीन वीडियो के साथ एक अच्छे कंटेंट के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गुड बाय और सब्सक्राइब करेगा स्पोर्ट्स ब्रेकडाउन को और KFCS को भी मिलते हैं कल एक बेहतरीन मैच के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गुड बाय एंड गुड नाइट